significant? What is significant? Basically the importance of significance is importance of biodiversity. Now just tell me, अभी 11:58 हुआ है, ठीक है? So it is till 12:20, right? पहला लेक्चर जो है 12:20 तक है, बराबर? Yes, sir. Time to check, Sir. So 12:20 we will take 10 minutes break and then we'll come back at 12:30. Is that right? Okay, sir. Okay. Yes, Now, sir. so I'll continue. Significance of biodiversity. Significance basically means importance. What is the importance of biodiversity? So importance कैसे group थे हम लोग का? It is in two components. One is consumptive. What is consumptive? Consumptive is something which you can directly use. Okay. Consumption. It could be a eating thing. It could be applying thing. So it is a consumptive value. And second is non-consumptive. जो आप consume नहीं कर रहे हो. ठीक है. So just check this thing. So food, drinks, fuel, medicine, crop varieties, materials are consumptive. ठीक है, मतलब क्या, जो भी चीज आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, एग्जांपल जो मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, जो क्रॉप्स है खाने के लिए, जो मेडिसिन है, जो फ्यूल यूज कर रहे हो डायरेक्टली, वो सब कंजम्प्टिव, यू आर यूजिंग डायरेक्टली. ठीक है. वाइल रिक्रिएशन, एग्जांपल रिक्रिएशन मतलब क्या, जब आप शिमला मनाली या स्विट्जरलैंड घूमने जाते हो, ठीक है, तो आप कुछ मतलब आप वो स्विट्जरलैंड का सीनरी देख के यू पे फॉर इट, राइट, कि आपको ये व्यू देखना है, उसको जाने को पैसा पे करना पड़ता है आपको, राइट. कोई भी सीनरी को व्यू करने के लिए, कोई भी एक पॉइंट को जाने के लिए यू पे फॉर इट, बट यू डोंट कंज्यूम इट. ठीक है, बट इट इज अ वैल्यू, इट्स अ रिक्रिएशनल वैल्यू. यू फील गुड. अभी आप सी एग्जांपल, बहुत सारे लोग चौपाटी जाते हैं, सी शोर को जाते हैं, ठीक है, दे डोंट ईट दैट sand, they don't eat the scenery, but they have some value. आपको recreational value, it gives you peace of mind. ठीक है, that is a recreational value. ठीक है. Education value, जो आप सीखते हो from the environment, you don't eat it, but you learn from it. You do research, there is traditional values for it, but you don't use as for eating or for applying. ठीक है. So we'll just first see the consumptive value. ठीक है. तो पहले आप एक images देखते हैं, then we'll see the text. So first is food. A lot of food, it comes from the biodiversity. Okay. So all food materials is directly or indirectly comes from plants or animals in the ecosystem. So example, okay, whatever food variety you are seeing now, okay, it was once part of the nature. It was wild. Now you have domesticated. You have interbred. You have made variety, and now you're using it as a food material. Okay. Now, that is food. Second is health. So many medicines which you use for allopathy or for herbal medicines is from the plant or animal source. So WHO is the, everyone knows WHO. What is WHO? World Health Organization. So this organization states that about 70 to 80% of world population uses non-conventional medicine. Because 70 to 80% of world population uses non-conventional. Conventional is the allopathy. ठीक है. Non-conventional medicine, example herbal for primary health care. What is primary health care? PHC जो बोलते हैं. अभी आपके यहाँ तो अभी आपके पास you have a lot of specialized hospitals. ठीक है. But if you go to a very very small village, जो हम लोग खेड़ बोलते हैं, ठीक है, खेड़ गांव बोलते हैं, एकदम, हाँ बोलो क्या बोला? रूरल एरिया, वेरी वेरी रूरल एरिया. तो गांव जो बोलते हैं रूरल एरिया में होते हैं, तो उस एरिया में यू हैव PHCs. व्हाट इज PHC? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. ठीक है. सो PHCs आर प्लेस वेयर इट इज अ सोर्स ऑफ हेल्थ केयर फॉर अ स्मॉलर एरिया. ठीक है. नॉट लाइक अ सिटी. सिटी में यू हैव अ लॉट ऑफ वेरियस ऑप्शंस वेयर यू कैन गो फॉर योर ट्रीटमेंट, बट गांव में वेरी वेरी स्मॉल एरियाज जो रहते हैं या ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे हेल्थ केयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे 70 to 80%, ठीक है, population is lives there and they use medicines in terms of herbal source. ठीक है. And we also use जो आयुर्वेदिक medicines है, it is a herbal source. ठीक है. A lot of allopathy is based on your plants and animals. So a lot of things what you use for health is from the biodiversity. ठीक है. So most medicines are derived from microbes, plants and animals. Example जो आपको दिया था मैंने, ठीक है, you can see that in the
chart. ठीक है, then you have agriculture. So example agriculture. So food, अभी agriculture is not just for food. ठीक है, you use some crops as cash crops. You use some crops for fodder for animals. You use some crops for making suppose some product. ठीक है, so agriculture significance: domesticated crops, wild plants including woody perennials, aquatic plants, domestic wild animals, all are used for fiber, milk, fur, organic fertilizer, वेरियस थिंग. सो आप फूड को यूज कर सकते हो, एनिमल प्लांट्स को यू कैन यूज फॉर फाइबर. ठीक है, जो आपके कॉटन आपका क्लॉथ बन रहा है. ठीक है, मिल्क. ठीक है, फर यू कैन मेक इट जैकेट आउट ऑफ इट. फर्टिलाइजर्स विच यू कैन यूज, जो उसका डंग रहेगा उससे फर्टिलाइजर बन सकते हैं. एंड फिश एंड एक्वाटिक एनिमल से अगेन एवरी एनिमल प्लांट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, इट कैन बी यूज फॉर योर फूड, for fiber, for milk, for fur, or something else. Cash crops, okay? It can be used for making some other thing. Example, a lot of paper will be made from a certain type of plant. Okay, so it could be used in some industry. Okay. Now, so if you are living in a region which is aquatically dominant, example आप river के बाजू में रहते हो या आप sea के बाजू में रहते हो, a lot of food is comes from the sea. A lot of food comes from the river. It could be fishes, it could be prawns, it could be some other supply. Okay, from the aquatic diversity. Okay, so it is also important part of agriculture biodiversity, because a lot of fishermen, they get food, they get income from the aquatic diversity. Now, last is economic significance. So everything basic or raw material for a human life, for industry, or for anything comes from the biodiversity. Okay, so it is a source of life supporting goods such as food, cloth, shelter, medicine, etc. Everything you use for living comes from the biodiversity, that is the animal, plants, and natural world. Okay, and because it is a very important part, it is a economic sector, because your food has a value, your cloth has a value in terms of money, your shelter has a value in terms of money. Okay, shelter in sense the area where you are living and the making. ठीक है, अभी यहाँ पे तो आपका सब कंक्रीट से बना हुआ है, बट इफ यू गो वेरी रूरल एरियाज में, इट विल बी मेड अप ऑफ either carvi or either some wood or some other material which is a natural material. ठीक है, ecological significance. So if we see, every animal, every plant, every microbe has some role to play in maintaining the food chain. What is food chain? Basically, how does energy flow from one place to another? Okay, from smaller animals to bigger animals, from plants to animals, or vice versa. Okay, how does the cycling of material takes place and the energy flow takes place? Okay, it is a food chain. Can you give me example of food chain? कोई मुझे example दे सकता है food chain का कोई भी? Can you give me example of any food chain you know? उनको बचपन सिखा रहे हैं ना कोई तो food chain. जानवी? Grasshopper. Yes, sir. grasshopper. Grasshopper, then frog. नहीं ऐसा मत बोल, फिर लोग को समझेगा नहीं. Grasshopper तो? बोल, grasshopper can be eaten by, ऐसा बोल. Can be eaten by. Okay. A grasshopper can be eaten by frog. Then frog can be eaten by snake. Snake can be eaten by eagle. Okay, चलो इतना पकड़ लिया. So energy कहाँ से flow हो रहा है? Energy flow कहाँ से हो रहा है? जानवी, energy flow कैसा हो रहा है? हेलो जानवी. Yes, sir. एनर्जी फ्लो कैसा हो रहा है बता मुझे, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है एनर्जी? Primary to secondary. नहीं अभी तूने जो एनिमल बोला ना उसमें से बता ना मुझे कैसे फ्लो हो रहा है. तूने एनिमल बोल उसमें से बता कहाँ से एनर्जी कहाँ पे जा रहा है. ग्रास हॉपर से डिकम्पोजर तक. अभी देखो डिकम्पोजर तो उसने बोला नहीं है फिलहाल. उसने कहाँ तक बोला है? उसने जो 4 बोले उसमें बोलो, फिर बाद में ऐड करता हूँ. फ्रॉम ग्रास हॉपर. हाँ, ग्रास हॉपर से कहाँ पे एनर्जी जा रहा है? ग्रास हॉपर से फ्रॉग. हाँ, फ्रॉग से फ्रॉम स्नेक. फ्रॉग टू स्नेक, स्नेक टू आवेल.
और ईगल ईगल, ठीक है। अभी ग्रासहोपर को एनर्जी कहाँ से आ रहा है? ग्रासहोपर को एनर्जी कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम सन, ग्रासहोपर को सन से? सन या नहीं, प्रोड्यूसर से। प्लांट से। अरे सादिया, प्लांट कहाँ गया? हाँ तो सर प्लांट। प्लांट को तो सन से मिल रहा ना, लेकिन तुझे प्लांट किधर बोला? जानवी ने प्लांट बोला था क्या? नहीं। तो फिर तेरे को ऐड करना, तुझे बोलना चाहिए था कि अच्छा। ग्रासहोपर को प्लांट से मिल रहा है, प्लांट को सन हाँ से मिल रहा है, ठीक हाँ। है। तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम सन टू प्लांट, प्लांट टू व्हाटएवर, ठीक है। सो एनर्जी फ्लो विल स्टॉप देयर, एनर्जी वापस जो डिकम्पोजर में जा सकती है, ठीक है। एंड देन द मटेरियल इज डिकम्पोज्ड एट एवरी लेवल फ्रॉम प्लांट टू ग्रासहॉपर, एवरीवेयर there will be decomposers which will decompose and they will take some energy and they will bring back the material which is the elements to the soil, ठीक है, nutrients to the soil, ठीक है। So food chain, it happens everywhere. Food chain is a part of nature. It is everywhere, ठीक है। Now this important maintenance of food chain, the energy flow, the nutrients, they are important for the life to sustain here. Without it, okay, a lot of natural processes will not happen. Example, how does, if you know कि a lot of movement of monsoon in India is based on this phenomena. अगर suppose you don't have a lot of forest in an area, ठीक है, there will be less chances that वहाँ पे बारिश होएगी, वहाँ पे precipitation, वहाँ पे मानसून आएगा। A lot of things which are, suppose अगर आपने बहुत सारे झाड़ काट दिए या एनिमल्स ने वो झाड़ खा लिए, ठीक है, या कुछ रीजन से वो इन्फेक्ट होके वो मर गए झाड़, ठीक है, फॉरेस्ट इज डाइंग, देन this will lead to less amount of monsoon or less amounts of rainfall to that area. So a lot of processes are interlinked, ठीक है। So example, मैंने आपको एक एग्जांपल देता कि a lot of Amazon forest is fertilized from the sand which is taken up by wind, ठीक है, from Sahara to Amazon, ठीक है। So you can see how it is connected, ठीक है, कि आपको लगेगा अरे सारा जो डेजर्ट है वो तो कितना दूर है with terms of Amazon which is in South America, सारा अफ्रीका में, but they have seen that a lot of sand is taken up by the wind and it is deposited on the Amazon forest and it is source of a nutrient, it is source. So you can see the ecology is all interlinked. Your sea is linked because sea से आपका clouds will be formed, ठीक है, clouds will go, it will touch either a mountain and it will start raining or it will be a forest which can support raining, ठीक है, because a cloud has to basically when it will pour, when it has a hindrance, उसको कुछ तो hindrance रहेगा, उसको कुछ stoppage रहेगा तभी वो pour करता है, otherwise it will not, it will just float away. But if there is a mountain, if there is a hill, if there is a barrier of a very cold wind or cold atmosphere, तब वो precipitate करेगा. So a lot of things are interconnected, ठीक है. So ecological influence, every animal plays a very important role in maintaining the food chain and other natural processes. It could be the wind, it could be the process of circulation of wind, it could be the rainfall, it could be the temperature, it could be many things. A lot of natural processes happen because of the animals and plants which are living at that area. So because of this, they maintain the climate. Now, can you tell me the difference between climate and nature and weather? Somebody can you tell me what is climate and what is weather? Can you tell me what is weather and what is climate? किसको पता है difference क्या है इसमें? Sir, weather is day-to-day state. Yes, perfect. और climate? Climate जो है वो it is the weather of a place average. अच्छा, मैं बोलता हूँ. So perfect. First thing is weather is day to day. So आज cloudy है, आज sunny है, ठीक है. आज थोड़ा जो भी differences है, वो day to day weather change होता है, ठीक है. But climate is a constant phenomena जो 20 plus years के तक same रहता है, ठीक है. Minimum, ठीक है. वो ज़्यादा रहता है normally. So if you see the climate of India, it is monsoon climate, ठीक है.
there is something called Mediterranean climate, there is something called जो Arctic or the polar region का climate है, there is something called equatorial climate, ठीक है, इक्वेटर के एरिया में है जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट. तो दिस क्लाइमेट डजंट चेंज मच, ठीक है. तो एग्जांपल जो क्लाइमेट है, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट फिनोमेनन. ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता है, इट विल चेंज आफ्टर टाइम, ठीक है, बहुत टाइम के बाद चेंज होएगा ड्यू टू सम प्रोसेसेस, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट विल रिमेन सेम, ठीक है. सो इंडिया क्लाइमेट बहुत साल से सेम है, ठीक है, बट वेदर इट चेंजेस एवरी डे, ठीक है. आपका हर दिन वेदर विल बी डिफरेंट एंड टाइम टू टाइम. एग्जांपल अभी सेम टाइम पे सनी रहेगा, थोड़े टाइम पे क्लाउडी हो जाएगा, ठीक है. सो वेदर विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट क्लाइमेट इट डजंट चेंज सो मच, ठीक है. ओनली आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल चेंज, बट नाउ फॉर लॉन्ग टाइम इंडिया इज अ मानसून क्लाइमेट, ठीक है. मेडिटेरेनियन रीजन में मेडिटेरेनियन. सो स्पेसिफिक थिंग्स, एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ थिंग कि मानसून, जैसे नॉर्मली मानसून में, ठीक है, वी गेट रेन ओनली इन दिस पीरियड, ठीक है. व्हिच इज दैट पीरियड? कौन से पीरियड में रेन आता है अपने को? व्हाट इज द पीरियड व्हेन वी गेट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल? अनिकेत, साइनाज, सादिया, what period, which is the period when we get rainfall? June to September. June to September, ठीक है. But same is not, this same is not true for other regions, ठीक है. आप अमेरिका में जाओगे तो आपको उस टाइम पे रेन नहीं रहेगा, ठीक है. आप अगर हिमालय में जाओगे, हिमालय में इफ यू गो, कोई अगर हिमालय में गया, यू विल नो दैट रेनफॉल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल देयर, ठीक है. वहाँ पे कभी रेनफॉल हो सकती है, ठीक है. यू कैन नॉट से कि अरे मई है आज रेनफॉल नहीं होगा, ऐसे नहीं, उल्टा मई में ज़्यादा रेनफॉल रहेगा, ठीक है. देयर बी स्नो, ठीक है. सो व्हेन वी गो, ठीक है, हम लोग नॉर्मली इफ यू गो टू हिमालय, व्हेन डू वी गो इन मई, बिकॉज मई में देयर इज अ लॉट ऑफ सन. अगर वही आप नवंबर में दिसंबर में जाओगे टू हिमालयन एरियाज, इट विल बी कवर्ड विद स्नो, बहुत ठंडी रहती है. सो नॉर्मली वी गो इन मई, ठीक है. सो मई में देयर विल बी रेनफॉल, देयर विल बी स्नोफॉल, देयर विल बी हेल स्टॉर्म्स, ठीक है. तो उधर इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है. जो कोई भी हिली एरिया में या कोई भी माउंटेन एरिया में होता है, इट इज डिफरेंट. बट फॉर अस, फॉर मुंबई, फॉर वेस्टर्न रीजन, इट इज मानसून एरिया, ठीक है. बट सेम डिफरेंट रहेगा अगर आप अफगानिस्तान में जाओगे, डिफरेंट. सो एरिया, डिपेंडिंग ऑन एरिया, इट्स क्लाइमेट डिफरेंट. एग्जाम्पल, वी गेट मानसून इन समर्स, ठीक है. वी गेट मानसून इन समर. बेसिकली वी हैव ओनली टू वेदर, समर एंड विंटर. So we get rainfall in summers, but different. अगर आप Mediterranean region में जाओगे, they get rainfall in winter. They will get rainfall in winter. So वहाँ पे भले अगर वहाँ पे बारिश हो ना हो, वहाँ पे ठंडी रहेगी. पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, बारिश होएगी, ठंडा हो जाएगा. Otherwise it will be hot because we are getting rainfall in summers, ठीक है. So depending on this is a climatic change, ठीक है. So this thing is by the nature, by the position of the globe. कौन से पोजीशन पे हो, कौन सा एंगल पे हो आप सन के, प्लस आपके आजू बाजू के एरिया में क्या. बिकॉज वी हैव अ वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज ऑफ विच वी गेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द trees, because of the western घाट we have a lot of tree cover, and because that we get a lot of monsoon, ठीक है. Which is the wettest region in India? पता है ना कौन से एरिया को सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है इंडिया में? किसको पता है कौन से एरिया को सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है इंडिया में? चेरापूंजी. नाम सुना चेरापूंजी? Yes, sir. ठीक है. सो इट इज द वेटेस्ट एरिया, ठीक है. सो इट इज इन नॉर्थ ईस्ट, सो इट हैज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ, बिकॉज इट हैज अ माउंटेनस रीजन, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. नाउ so this is part of climate, ठीक है. So this climate will regulate the supply of water, ठीक है, the fertility of soil, everything is connected to it, ठीक है. So example last time आपको मैंने बोला रहेगा कि how does rivers are formed, river कैसे फॉर्म होती है, किसको पता है? जैसे रिवर में पानी कहाँ से आता है, कोई भी रिवर हो तो मुझे एग्जांपल कोई रिवर का, और मुझे उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्लेशियर. ग्लेशियर. चलो, ग्लेशियर इज द वन सोर्स फ्रॉम विच अदर. और बोलो, अभी बॉम्बे में जो मुंबई में कोई भी रिवर है क्या?
मुंबई में कोई रिवर है River. क्या? वापस बोलो अनिकेत, वापस बोलो। Meethi River, sir. हाँ, सो अगर अगर आप मीठी रिवर, ओशिरा रिवर, दहिसर रिवर, ठीक है, ये सब में पानी है, ठीक है, बट वो पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो ग्लेशियर नहीं है। मुंबई के आसपास कभी ग्लेशियर है क्या? No, sir. फिर कहाँ से पानी आ रहा है उनमें? कौन जाके भर रहा है? ऊपर जाके पानी फेंक रहा है क्या कि पानी नीचे आने के लिए? So from where they are getting the water? ठीक है, so normally it is said that mountains and specifically the forests on mountains are the source of water for rivers. ठीक है, Sir, वो mountains में कहाँ से आता है फिर पानी? हाँ मैं बता रहा हूँ. Normally what happens, the area or the hill areas, the western ghats जो है इंडिया में, जो western ghats है which is on the western side, ठीक है, they have a rock which is porous. They have a rock which is porous. What is porous? What does porous means? होल्स होते हैं उसमें. जो वाटर सक कर सकता है. So what happens when there is a rainfall, ठीक है, अगर वो पोरस रॉक के ऊपर कुछ भी रहेगा नहीं, वो पोरस रॉक के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा? वाटर विल जस्ट गो आउट, ठीक है, इट विल रन ऑफ. बट अगर वो रॉक के ऊपर यू हैव अ फॉरेस्ट, यू हैव सम ग्रीनरी, you have some soil, ठीक है, then this forest will hold the water till a time that this rock can accumulate, it can suck it, it can get the water. अगर उसके ऊपर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, उसके ऊपर सॉइल नहीं रहेगा, तो वो इट विल रन ऑफ. बट अगर उस पर फॉरेस्ट है, उस पर सॉइल है, तो इट विल गेट टाइम टू गेट replenished, it will trickle down, it will go inside the rock, and rock now can store water. This rock will store water in form of under, there's something called underground water. पता है ना underground water? Yes, sir. ठीक है, तो यू हैव अ वाटर टेबल. एक एक बेस रॉक होता है, बेस रॉक के ऊपर पानी होता है एंड बेस रॉक के नीचे पानी होता है. ठीक है, यू हैव बेस रॉक व्हिच इज देयर ऑन द पैट, जो आपका एरियाज होता है कोई भी एरिया में, यू हैव बेस रॉक जिसके ऊपर आप नॉर्मल आप आपके बिल्डिंग्स को खड़ा करते हो, व्हिच इज अ बेस रॉक. ठीक है, सो दिस बेस रॉक के ऊपर यू हैव वाटर, दैट इज कॉल्ड द वाटर टेबल ऑन टॉप ऑफ इट, एंड उसके बिलो होता है. सो नॉर्मली जो बोरिंग वेल्स होते हैं, जो डीप वेल, देयर इज टू बोरिंग वेल्स, वन इज बोरिंग वेल, देयर इज डीप बोरिंग वेल, पता है ना तुमको, डीप बोरिंग वेल्स. सो जो फर्स्ट बोरिंग वेल, जो आपके नॉर्मल वेल्स होते हैं, दे टेक वाटर फ्रॉम द टेबल टॉप. ठीक है, जो आपका रॉक के ऊपर जो पानी होता है, विच इज फ्रॉम दिस, जो आपके माउंटेन्स होते हैं, जो वो पानी सोक करते हैं, और वो फिर ये अंडर वाटर टेबल को भर देते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेयर यू गेट द वेल्स. ठीक है, बट वंस दिस अंडरग्राउंड वाटर, जो टेबल है, वाटर टेबल, इट इज फिल्ड, वो भर जाता है एक बार. ठीक है, जब वो भर जाता है, नाउ देयर इज नो प्लेस फॉर द वाटर टू trickle. What it does, it will trickle down in form of streams from the top of the mountain, and then it will make the river, and river will go down. ठीक है, so till the time the water table is not filled, ठीक है, the river will not flow. ठीक है, so ऐसे अभी क्या होता है, now when you take out a lot of water from well, ठीक है, वेल से आप पानी निकालते होगे, ठीक है, तो वो वाटर टेबल में पानी अब नेक्स्ट टाइम जब रेनफॉल होगा, द माउंटेन विल फिल. बट सपोज आपने वाटर टेबल बहुत डिप्लीट कर दिया, ठीक है, जैसे आपने वाटर टेबल डिप्लीट कर दिया, आपके रिवर्स भी सूख जाएंगे, बिकॉज रिवर विल नॉट फ्लो इफ द वाटर टेबल इज नॉट फुल. वंस द वाटर टेबल गेट्स फुल, ओनली देन द एक्सेस वाटर जो माउंटेन पे है, इट विल ट्रिकल डाउन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. ठीक है, नॉट रन ऑफ. रन ऑफ जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, और ये ट्रिकलिंग होता है, ये स्लोली होता है. ठीक है, बिकॉज माउंटेन में हर जगह पे पानी है. ठीक है, एट अ प्लेस जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता है, वहां से रिवर्स स्ट्रीम्स फॉर्म होकर स्ट्रीम्स बन के रिवर्स बन के आते हैं. ठीक है, सो इसलिए हम लोग हिंदी में ये है कि पहाड़ ये नदी की माँ है. ठीक है, पहाड़, इट कुड बी अ ग्लेशियर, इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ थिंग. तो पहाड़, और स्पेसिफिकली पहाड़ में जो जंगल है, ठीक है, पहाड़ में जो जंगल, ऊपर जो जंगल है, इट इज द मदर ऑफ अ रिवर. ठीक है, विदाउट दैट रिवर विल नॉट बी फॉर्म. ठीक है, सो that will this phenomena of river coming will also fertilize the soil. Elevate the ecological value, that every animal plays a role in maintaining the food chain, in natural processes which could be wind, maintains climate, regulates supply of water, increases fertility soil. Plants
they help in conserve source of water, reduce evaporation disease. Okay, so all this thing, okay, is basically it it maintains the basic the ecological system. Okay, the cycling of material, the flow of energy, all this is maintained by the animals and plants. Okay, to sustain life. Okay, that is the ecological system of biodiversity. Then recreation aesthetic value. So recreation is basically what you do in your free time for uh, for fun. Okay, and aesthetic is where aesthetic is basically a beauty. Okay, it's a beauty value. Aesthetic value example: when you see a mountain, when you see a forest, okay, you feel that there's a arrangement, there's a scenery, a beautiful scenery. If you see a pond, okay, there's a aesthetic value, it is a beauty value. Therefore, people go and they hang around near natural places. Okay. So, biodiversity enriches free time activities such as hiking. ठीक है, hiking जो करते हैं हम लोग normally you will not hike into a building, you will hike in a forest or in a hill region. Bird watching, ठीक है, which is my passion also. Or nature trails, natural history study, gardening, fish keeping, depends on biodiversity. All different recreations, ठीक है, of humans is based on the aesthetic value of nature. It could be the example of जैसे आप स्विट्जरलैंड जाते हो, what do you see in स्विट्जरलैंड? अभी आप लोग मैं तो गया नहीं हूँ, ठीक है, but if someone goes, what does it see there? क्या देखेगा उधर स्विट्जरलैंड में जाके? क्या लगता है आपको, क्या देखेगा जाके स्विट्जरलैंड में? Why will you go to Switzerland to see what? Shahnaz, प्रसाद, निकिता, आकांक्षा, what you will see in Switzerland अगर आप जाओगे तो, और क्या देखोगे आप? जैसे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था, वो बोलता था कि मैं वहाँ जाके मॉल देखूंगा, ठीक है, उसके लिए मॉल इज गुड, ठीक है, बट सब लोग मॉल जाके थोड़ा देखेंगे कि वहाँ मॉल कितना अच्छा है. स्विट्जरलैंड के मॉल देख के आए. Mountain. Yes, so basically nature scenery, okay. So they will see the scenic beauty of that place, okay. But one of the students was thinking to go in the mall, okay. But for different person, there's different recreation aesthetic value. So a lot of areas are beautified due to nature, okay. Then inspiration. So a lot of people will go to a natural place to basically get inspired by the beauty of nature. Example: artists, painters, sculptors, musicians, writers. They will go to a quiet and serene place like a forest or a garden or whatever area it is near to get some inspiration. Okay. A lot of people will paint the natural beauty in canvas. A lot of sculptor will see the humans, will see the tribals, will see the animals, will see the plants, and they will make a sculpture. A lot of musicians will go to their, for example, Tansen का जैसा, ठीक है, there was a myth that Tansen used to go in the forest and then used to make his music, ठीक है, because it will inspire him. A lot of writers will go and they will make poetries based on nature, ठीक है, looking at the nature or taking a nature as a symbol, ठीक है, that's inspiration. Okay, and then the escape is basically because you work from 9 to 6 in a job, in office, okay, you get bored by the monotonous life, same चीज रोज करना है, you get bored, okay, and you get stressed. A lot of stresses and a lot of basically your mind is not free. You have something or other working in your mind. आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है continuously. There is a daily hustle and bustle of your life. ठीक है, you have something to pay, you have something to do. आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके यहाँ आपके सराउंडिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ काम करना बाकी है, आपको कुछ अचीव करना है, आपका कुछ गोल है, आपको कुछ पैशन है. There are a lot of things which keeps your mind awake in sense of working. ठीक है, so because your mind is also machine, it needs rest. ठीक है, for that escape you go to a area which is naturally beautiful, which doesn't have so much things going on, that will basically lower your blood pressure. It will give your mind a relaxation
moment, ठीक है, that is escape. You you get a sanctuary. This sanctuary is basically a place where you will feel good, ठीक है, आपको you will breathe good air, ठीक है, you will feel nice because it is normally a natural place. It's not hot, it is a little cold than a normal thing, ठीक है, you will get a lot of breeze, ठीक है, all of this provides you a escape from your normal life which is hectic, ठीक है, you don't have things, अरे मेरे को भी जाना है, यहाँ जाना है, वो करना है, ऐसे करना है, at least for that time period you will be relaxed, ठीक है, that is escape, ठीक है. So normally you don't go to escape in a office. अगर आपको escape चाहिए आपकी लाइफ से, you will not carry आज मैं ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में जाके दूसरे ऑफिस में काम करता हूँ, but you will go to a natural place or a resort or whatever you think is appropriate. That is the one of the significance of nature. It is a escape from your normal routine.